Hi everyone, today's video is about the beginner's guide, and many of you, especially those of you who are starting the preparation, demanded this kind of a video. But before I begin, there's a disclaimer. Unlike many of the beginner's guide which you can find easily available on the YouTube, where they will tell you like what are the book list and what are the other resources that you need to refer, in this particular video I'll try to take it a step ahead. Apart from the book list and the resources, I'm going to tell you what a beginner should do or should avoid to have a smooth journey in their anthropology optional preparation. And of course, all these things which I'm going to tell you are based upon my own personal experience. Some of you might disagree to it, and some of you might agree to it. But whatever you do, please do have your own wisdom and understanding. Do not follow anything which I tell you or anyone else tell you blindly, because that sometimes may be counterproductive to you, because each one of us are different. We all have our own unique qualities and abilities. So that's why listen to everyone, but do what you think is suitable for you. But before anything else, let me just take you through some kinds of doubt which I received on a daily basis. And these are like few of them. There are various doubts on the similar line, you can say, more or less on the similar line. You can take a pause and just go through it. Like if these doubts are relatable to you as well. Because through this video, I'll try to answer some of these doubts as well. Alright? So सबसे पहले एक सवाल that comes to the mind of a beginner especially, that how to begin, from where to begin, क्या करे क्या ना करे, which book to read right now. Suppose let's take a hypothetical example that you are a beginner, or you are just going to start your preparation in this November itself, and you are very much anxious like what to read and what not to read, from where to start. See, to answer such questions, one thing you should keep in mind that the exam which you are going to appear is very different from the college examination. In the college, you have certain set of books which you need to go through, and then you have the syllabus, and you know the defined pattern that doesn't really change, because the professor who's there, who's teaching you, is teaching the previous batches as well, more or less, right? So you cannot expect some kind of a very different thing every year. That is quite predictable as well. But when you talk about UPSC, UPSC is not predictable. It's very unpredictable. And I usually get this doubt that, ma'am, what is the best strategy? So my dear, let me tell you, there is no such best strategy. ये जो best strategy वाला myth है ना, BEST, best, there is nothing as such best in the UPSC journey. What you do, what suits you is best for you, but might not be best for the other person out there. So this thing you should keep in mind. So इतना कहने का मतलब यही है that one should frame their own strategy rather than running behind others. Because अगर ऐसी कोई strategy होती which could fetch you like 300 plus marks, तो imagine वो जो कोई भी coaching institute होते या जो कोई भी aspirant होते, topper होते, they could have been at the top of the world, because they can guarantee you that you will get 300 plus marks. But ऐसा कुछ होता नहीं है. You might hear the advertisement, you might see the advertisement, you might hear the toppers talk, but let me tell you, the reality is very different from what you see. And to see the actual reality, you have to deep dive into this journey, and you have to figure it out that what is going to be best for you. तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये करेंगे कैसे? First thing first, you should take the syllabus. Because here I am assuming that you have chosen anthropology optional considering everything, that what are the scope of anthropology. It covers certain biological parts, certain non-biological part. It is very diverse, the tribal part and everything else, right? And you are well known about all these things, and now you have chosen the anthropology optional. Then what is the next thing which you need to do? Now, since you have chosen anthropology as the optional, first you should be well versed with the syllabus. And what do I mean
that you need to be well versed with the syllabus. Because again, एक hypothetical situation ये भी है कि आप non biological background से हो, आप non anthropological background से हो. So if you see the syllabus, आपको हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में ही ना आए, because आपने anthropology तो choose कर ली है, but once you go through the syllabus, there will be various keywords which is unknown to you because you don't have an anthropology background, neither have a biology background, neither have a social science background for that matter. Then आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत एलियन सी लगेगी. Then what to do next? Syllabus देख लिया. Then you can go through some of the topper strategy. Not to replicate it, but just to get a hang of it. Because वो जो बोल रहे हैं, as I told you, उसको पत्थर की लकीर ना समझे. Whatever they are saying, just listen to them. So then you will get an idea कि आपको syllabus में कुछ keywords आपने पढ़े थे, उसके बारे में toppers क्या कहना है. This is just the beginning, because आपको वही topper strategy हो सकता है बाद में भी कई बार रेफर करनी पड़ जाए. Syllabus तो आपको देखते रहना ही रहना है. It's like the holy book. Then what next? See, अब इसमें लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं रिगार्डिंग विच बुक टू रीड फर्स्ट. अगर आप नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड से है, नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से है, देन आई वुड रेफर दैट आप केरला SCRT की क्लास 11 और 12 की बुक को पढ़ें. बहुत सारे लोग आपको एम्बर एंड एम्बर के बारे में बोल सकते हैं, but again, this is my personal opinion that once you start reading Ember and Ember, you never know आपको क्या पढ़ना है. It is such a vast book with so many information into it that someone who's very new to the subject kind of get lost into it. So in my personal opinion, अगर आपको शुरू करना है and you want to get a hang of anthropology, start with the Kerala SCRT class 11 and 12. क्लास 11 के अंदर आपको बेसिक्स मिलेंगे, देन क्लास 12 के अंदर आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ सकते हैं. इन द फर्स्ट रीड जस्ट गो थ्रू इट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अनबायसनेस दैट आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है. बट वंस यू फिनिश दिस टू बुक, देन उसके बाद आप वापस से सिलेबस को देखो, देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि येस, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई रेड इन दिस बुक कैन बी फाउंड इन द सिलेबस एज वेल. देन आप दोबारा से टॉपर स्ट्रैटेजी को देखोगे तो उनके इनसाइट्स आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे. देन व्हाट नेक्स्ट? आप में से जो लोग चाहे इसको आप एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हो, बट इफ़ यू जस्ट लिसन टू इट एंड विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइक जर्नी, आई थिंक थोड़ी लाइफ उससे ईजी हो जाएगी. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, देन व्हाट नेक्स्ट? आपने ये सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, देन जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन, नॉट विद एन इंटेंशन टू सॉल्व इट, बट जस्ट टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ एन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द UPSC, राइट? जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, विच इज टू मेक द नोट्स और टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन रियलिटी. बिकॉज अभी तक जो आपने ये सारी चीज़ें की, दिस इज जस्ट बिल्डिंग द ग्राउंड भी आप कह सकते हो. अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ग्राउंड बनाना भी शुरू ही हुआ है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है. बट वंस यू स्टार्ट वेल, यू विल एंड वेल, राइट? तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, देन कम्स योर नोट मेकिंग, राइट? और वो नोट मेकिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसके भी अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब सिलेबस में आप शुरू कहाँ से करें. ये भी एक बहुत कॉमन डाउट होता है दैट आपको पता है कि ओके दिस इज द सिलेबस, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस दैट फ्रॉम वेयर टू बिगिन सिलेबस में भी. माय डियर, माय एडवाइस वुड बी टू बिगिन फ्रॉम 1.1 और द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज गिवन इन योर सिलेबस. द रीजन बीइंग, कुछ लोग आपको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से शुरू करो. अगेन आई एग्री विद दैट, but only for those people who have certain idea of the background of the anthropological theories. अगर जिसके पास आइडिया नहीं है, आप अगर anthropological theories सबसे पहली बार पढ़ने जाओगे, again you will get lost. आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं, इतने सारे names है, इतने सारे books है, ये क्या कहना चाह रहे हैं. You will be never able to understand it. So to make your life easier, start from the scratch. सबसे पहले आप एंथ्रोपोलॉजी क्या है वो जाने, उनके ब्रांचेस के बारे में जाने, देन स्टार्ट इवेंचुअली. बिकॉज आप ये सोच के मत चलो कि एक ही बार में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा.
आपको इसी पर्टिकुलर चीज़ को कई बार रिपीट करना पड़ेगा। आप जब एक या दो बार शुरू से अंत तक जाओगे, देन आपकी ऑटोमेटिकली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से आप रिलेट कर पाओगे कि ओके, हाउ द मैरिज section is related to the anthropological theory, how you can relate the family with the anthropological theory, culture, society, ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑलरेडी पहले पढ़ोगे, देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ोगे, और इवेंचुअली जब आप थर्ड या फोर्थ साइकिल में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी पढ़ोगे और उससे कल्चर को रिलेट करोगे, तो यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड। लेकिन बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो सीधा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से शुरू करते हैं, बट इन माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट स्ट्रैटेजी फॉर समवन हु इज नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड। अगेन द चॉइस इज योर्स। अगर आपको लगता है कि आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हो, बट वाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड? जब आपके पास सिलेबस है, यूपीएससी ने उस तरीके से दिया हुआ है, आप शुरू करो वैसे। देन आप जब दोबारा तिबारा चौथी पांचवी whichever cycle that you are going through, you can improvise it, but in the beginning don't try to experiment much. All right? अब बिगिनर्स के मन में ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है that how much time is needed for preparation, कितने टाइम में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगेन बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 3 months में कंप्लीट कर सकते हो, कुछ तो बोलेंगे लाइक यू कैन कंप्लीट इट इन 1 month, बट believe me, that's a myth. There's no such optional, especially social science की अगर आप बात करें, इतना कुछ पढ़ना है एंड इतना कुछ याद भी रखना है आपको, एंड देन यू हैव टू ग्रास्प द थिंग, यू हैव टू इंटरलिंकेज द थिंग, तो ऑल दोज थिंग्स कैन नॉट बी डन बाय 3 months. If somebody is telling you 3 months is enough for the preparation, that 3 month mean that जो मैंने अभी आपको बात करी, all these groundwork and the note making thing, that you can actually do in the 3 months. But don't consider yourself that you are going to be a pro in that 3 months. ऐसा कभी नहीं होगा. You have to devote a good amount of time, and that 3 month again depend, because you just don't have to study the optional. You have your GS, you have the ethics and everything, and you also need to practice the essay writing, and all these things are there. Then how can you devote a good amount of time every day to your optional and complete it in just 3 months? तो ये भी अपने आप में एक रियलिटी नहीं है when you actually start doing it. So my advice would be, if you are going for the preparation and starting it, don't have this like mindset that I'll complete it in 3 months and 4 months. It doesn't matter until unless on the day of the exam you are well prepared with your subject. No matter you have completed it in 1 month, 3 months, 6 months, 9 months and whatever, but you should complete it well. और वो भी अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करती है. कुछ लोगों ने पहले एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रखा है एंड दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. कुछ लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई है, बने बनाए नोट्स मिले हुए हैं एंड दे आर लाइक फॉलोइंग इट एंड इम्प्रोवाइजिंग इट ऑल्सो. उनके लिए लाइफ अलग ईजी हो जाती है. देन समबडी हु इज हैविंग सर्टन बैकग्राउंड, उनके लिए अलग हो जाती है. एंड समबडी हु हैज़ गिवन द अटेम्प्ट एंड देन टेकन अ ब्रेक एंड देन रीस्टार्टेड, उनके लिए अलग हो जाती हैं. तो थिंक अबाउट इट दैट who you are. आपकी पोजीशन क्या है, where do you stand, what is your level of preparation, how much you are going to do. इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा. तो आई डोंट कंसीडर इट टू बी अ वैलिड क्वेश्चन फॉर एनीवन कि कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. एंड वंस यू आर like preparing for this examination, आपको टाइम देना होगा. there is no such magic wand that can allow you to complete everything in just 2-3 months. You will hear some toppers जिन्होंने complete किया है, but आप उनकी पूरी story भी नहीं जानते, what they have done before that, right? So इसीलिए किसी को भी सोचने समझने से पहले और किसी की भी strategy को as it is follow करने से पहले, just relax and think about कि what is your position and then take action, right? Then this is a question that coaching or not. See, coaching लेना या ना लेना ये completely person to person differ करता है, and there are various factors also which defines that you will take a coaching or you will not. If I just tell you with certain like practical examples or practical things, अगर if somebody is starting their preparation say in 2007, 2009 or even 10, 11, 12, or for that matter 2013 or 14 also,
then they can definitely need the coaching. The reason being, at that point of time, there was no such boom of material, freely available material on the internet. But in today's world, thanks to the YouTube, thanks to the other like platforms, there you can find ample of freely available material. And if you wanted to utilize those freely available material, you could definitely do so. And trust me, the Coaching Institute does not give you something very special which you cannot do by yourself. What you just need is a good time, patience, and a will to do it. Because Coaching Institute में आप जाओगे वो कोई गारंटी नहीं करते. Like I'll tell you with a personal example, I didn't took any coaching, but I took the test series, and whatever they like promised in their pamphlet, in their notification about the test series that they're going to do, they are having going to have some kind of an interaction, feedback session, and the model answers and everything. I didn't got anything, and I paid a good amount of money for that test series. I have written those test series, they have checked it, but there wasn't any kind of an feedback which I could actually take and improvise it. It was there was no such like you can say constructive feedback that was given. Sometimes it was just ticked and the marking was there. Sometimes you are asked to check on the spellings and something like that, but no constructive feedback was given, and there was no such one-to-one interaction also where you could ask your doubt and something like that. And above all, the model answer which they like promised to provide was not provided. But you cannot chase them because you have limited time in your hand. You have to prepare for your exam. You just cannot run behind the coaching institute to make them deliver all that they promise. So instead of depending upon any of the coaching institute, of course the money factor is also there. Like, do you have that much of money to invest into the coaching institute? And above money, do you have that much of time? Because coaching will eventually take at least 3 to 4 hours of your day. Because if you have to travel to the coaching institute, or even if you're taking the online classes, there is certain time slot that needs to be freezed for that coaching institute. So depending upon all these things, you need to decide for yourself that whether you need the coaching or not. If the things are available to you and you feel that you can do it, you do not need coaching. But if you feel that you do not have any resources with you, and you even do have time and money, then you can definitely go for coaching. So again, this is person specific. I hope you got the point. Another very frequently asked question is about the book list. So now here I'll try to connect with the resources which are available on the Anthropology for UPSC channel, as well as the notes. See, the book list which is being prescribed is by the toppers and by the coaching institutes, and the purpose is for you to complete the syllabus. So here I'm not writing down any specific book list for you, because if you just take a bit of pain and just Google it out about the Anudeep sir's strategy, he has mentioned about all the books that one needs to study while completing the syllabus. Now coming to the specific book, that from where you should read, like do you need to read page to page, or there are some specific portions of it. See, again, it is very person specific and depends upon at what level of your preparation you are. सी आपको बुक को लेके कोई फोमो फीलिंग होने की ज़रूरत नहीं है. योर मेन पर्पस शुड बी टू कंप्लीट द सिलेबस. अब वो सिलेबस आप कहीं से भी कंप्लीट कर रहे हो, से फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मैरिज एज अ टॉपिक पढ़ रहे हो इन पेपर 1, then you should see like what are the things that you need to know in that particular topic. So the very basic thing that comes to you कि आपको marriage की definition पता होनी चाहिए, and definition which is given by scholars also. Then marriage वाले ही topic में आप देखेंगे universality of marriage के बारे में पूछा गया है. Then universality of marriage को बताने के लिए you can use the definition and then the criticisms of that, which can show that how this marriage is not universal. राइट तो इसके लिए आप एक पूरी की पूरी बुक पढ़ने जाए, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ओवर हियर, बिकॉज मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू
think in a very different manner other than the college examination. College examination different होता है, UPSC examination different होता है. When the toppers say कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए, by that they mean कि आपको उस बुक से जो कंटेंट है सिलेबस स्पेसिफिक वो एक्सट्रैक्ट करना है और वो पढ़ना है. नाउ कमिंग टू द यूटिलिटी ऑफ दिस चैनल, आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, आई हैव ट्राई टू गिव इट टू यू. बट अगेन उतना ही इनफ नहीं है. लेट मी रिपीट इट, उतना ही इनफ नहीं है. Because the content which I have provided you is exhaustive, which is being prepared by me during my preparation, in which I have scored well. But साथ ही साथ ज़रूरी ये है आपको अपनी तरफ से कि आप अपना एफर्ट भी लगाएं. इसलिए बुक के पीछे ना भागें. अगर आपको लगता है that you need to study Peanuts, you need to study the books for the tribes, you can definitely do so. But first analyze कि क्या आपके पास जो content है, is that enough for you to write down the answer which is being asked in the previous year? If the answer is yes, then believe me, you don't need to go through the books. आपको books की ज़रूरत बस उसलिए है ताकि आप topic को समझ पाए. UPSC is not going to see whether you have read the book cover to cover or not. UPSC wants to see कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको आंसर कैसे कर रहे हो. अब आप वो YouTube के वीडियोस देख के कर रहे हो, आप 10 किताबें पढ़ के कर रहे हो, आप टॉपर्स की नोट को एक्सट्रैक्ट करके कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, राइट. और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, देन इवेंचुअली जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है आफ्टर लाइक मेनी साइकिल्स ऑफ रिविजन एंड यू गिव द टेस्ट, उस टाइम पे जो भी वैल्यू एडिशंस निकल के आते हैं, विच एवर द टीचर दैट यू हैव और द इंस्टीट्यूट विच यू हैव टेकन द टेस्ट सीरीज, या आप अपने आप से भी पीयर रिव्यू करके आंसर राइटिंग कर रहे हो, while writing those answers you will realize so many things, because that is the point. आपको खुद enlightenment feel होगा कि now when I have completed both the papers, the entire syllabus, I can do interlinking, I can do so many things which I wasn't when I just started my preparation. इसीलिए बुक लिस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करें अभी के लिए, राइट. सो दिस इज माई पॉइंट. और अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट वांटेड टू मिस एनीथिंग एंड आपको बुक पढ़ने ही पढ़ने हैं, यू कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स दैट. बट अगेन बुक लिस्ट या बुक्स इसलिए है ताकि आप कंटेंट प्रिपेयर कर सके. और जब आपके पास कंटेंट बनाया है, यू नीड नॉट टू go through each and every book. Of course you can do the value addition from your own level, because जो भी value additions मैंने आपको दिए हैं, आप जब और चीज़ें पढ़ोगे और भी चीज़ें निकल के आएंगी. Even now when I read some books or some articles or something, I get many of the new points which I try to include. तो आप भी वैसा ही कर सकते हो, बट एक बेस तैयार होने के बाद. अगर आपके पास बेस ही नहीं है, डोंट जस्ट रन बिहाइंड कि ये भी बुक पढ़ ले, वो भी बुक पढ़ ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले. You will land up nowhere if you keep on doing like that. Okay, I hope this is all. Now एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है. आई वोंट से कि बहुत सारे लोगों की ऐसी क्वेरीज रहती है, बट देयर आर पीपल हु आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द करंट अफेयर. इट्स गुड कि करंट अफेयर को लेके आप इतने कंसर्न्ड हो, बट अगेन यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट. ऑफकोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, बट for the simplification purpose, I will just take two kinds of student or aspirants. एक तो वो जिन्होंने सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस के ऊपर उनकी कमांड है, एंड फॉर दैट मैटर शायद वो एक बार मेंस भी लिख चुके हैं, राइट. देन देयर आर सेकेंड काइंड ऑफ पीपल who have just started their preparation. They are somewhere in between their paper 1, not even touched paper 2. ठीक है. तो ज़्यादातर ये जो क्वेरी है वो ये जो सेकेंड नंबर वाले लोग हैं इनसे ही आती है. आई होप इनमें से भी होते हैं लोग जो मेंस लिख चुके हैं एंड दे आर लाइक वांटेड टू हैव द करंट अफेयर्स, बट काफ़ी कम होते हैं, बिकॉज दे माइट हैव समवेयर रियलाइज्ड इट ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन. जितना ज़्यादा फोकस आपका एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल सिलेबस पे होता है, करंट अफेयर उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है. इसके दो बहुत सिंपल रीज़न हैं. One is when you start revising your optional while the mains examination, उस टाइम पे ये feasible नहीं होता है that you go through the current affair also and remember it as it is and write it down on your paper. Specific की मैं बात कर रही हूँ. हो सकता है आपको कुछ current affair of course याद रहेंगे, आप उनको लिख के भी आओगे, बट वो जो scope है
शायद आपको मिले या ना मिले, बट उस स्कोप के चक्कर में यू आर गोइंग टू डिवोट अ गुड अमाउंट ऑफ योर टाइम इन चेजिंग दोज करंट अफेयर्स, राइट? तो आपने करंट अफेयर्स बहुत सारे इकट्ठा कर लिए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस इट ऑन द पेपर, विच मीन्स you have surely wasted your time in collecting those current affairs. और जब किसी चीज़ को आप कलेक्ट कर लेते हो और कुछ यूटिलाइजेशन होता नहीं है, then it is total waste, especially in this examination, right? Then क्या किया जाए करंट अफेयर्स के लिए, इस पे कितना टाइम देना चाहिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? सी एज आई टोल्ड यू कि करंट अफेयर अगर आप पेपर में लिख के आते हो, वेल एंड गुड, बट करंट अफेयर इज नॉट द one that is going to fetch you the marks. Your content is the king. Of course उस कंटेंट को और डेकोरेटिव बनाने में आपके करंट अफेयर रोल प्ले कर सकते हैं, बट उसका जो ROI है वो काफ़ी बेकार भी हो सकता है इन सम केसेस. बट अगर आपको लगता है दैट यू शुड रीड द करंट अफेयर, यू कैन डेफिनेटली डू सो. आपको बहुत सारे मैगजीन्स भी मिलते हैं, like there are coaching institute who are making it freely available to the students. Apart from this, when you have completed the syllabus, because see, सबसे पहले ज़रूरी है आपको बेस तैयार करना, आपके सिलेबस और उसके ऊपर जो कंटेंट है उस पर कमांड होना. देन कम्स द रोल ऑफ द करंट अफेयर. और अगर आप उस स्टेज में हो that you have completed your paper 1 and paper 2 in a good manner, and you have that much of confidence that you can write the question का answer, then eventually अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कलेक्ट करो मटेरियल, नो वन इज स्टॉपिंग यू. बट इस दरमियान, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ योर पेपर एंड पेपर 2, उस टाइम पे आप ये कर सकते हो दैट यू कैन कीप एन आई ऑन द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. और जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ोगे और जब सिलेबस को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है, आपको पता है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, when it will come in the newspaper, whichever newspaper that you are reading for your GS, may it be the Hindu, may it be the Indian Express or any other newspaper, आप जब कभी भी वो पढ़ोगे, I am damn sure कि आपकी नज़र स्ट्राइक ज़रूर करेगी in that particular article which you can relate with your anthropology optional. And this is how you can make a separate folder or anything, like if you have a habit of writing it down physical form में, you can definitely do so. And then वो वाला जो कंटेंट है वही इवेंचुअली आपको याद रहेगा, ना कि वो जो मोटे मोटे मैगजीन्स आपको दिए जाते हैं. दे माइट फ्रस्ट्रेट यू समटाइम्स, बिलीव मी, ऐसा होता है. बिकॉज एग्जाम जब आप, when we're talking over here, we are just talking about कि actual examination में क्या होता है. करने की आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. You can have a kind of a study that you might top the anthropology exam without even having the anthropology background. आप मास्टर्स लेवल को भी टॉप कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की भी हो सकती है. बट द थिंग इज कि आप उन चीज़ों को क्या एक्चुअल एग्जाम में प्रेजेंट कर पा रहे हो इन केस ऑफ यूपीएससी, जहाँ पे आपको टाइम कंस्ट्रेंट है. बिकॉज जब आप बात करते हो सोशल साइंस के एग्जामिनेशंस की, द कॉलेज एग्जामिनेशन, वहाँ पे इस टाइप का टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है. व्हेन यू हैव टू राइट so many questions in a limited time frame which is 3 hours, आपको कॉलेज एग्जामिनेशन में नहीं होता है. सो देयर यू हैव so much of liberty to show your creativity because आपके पास टाइम होता है. लेकिन यहाँ पे आपको टाइम कंस्ट्रेन के साथ क्रिएटिविटी शो करनी है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि पहले तो आप अपनी तलवार की धार तेज करो, विच इज़ योर कंटेंट, द एक्चुअल कंटेंट, द सिलेबस पार्ट. देन कम्स दिस क्राउनिंग ऑफ दिस करंट अफेयर्स. मैंने भी अपने नोट्स के अंदर करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो कितने भी मैं इंक्लूड कर लूँ, आप उसको एक बार दो बार देख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं देख पाओगे. एंड इवेंचुअली वो एक दो बार देखने में भी आपका टाइम वेस्ट होगा. तो इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, फर्स्ट कमांड ऑन योर लाइक टॉपिक, द कंटेंट, द एक्चुअल पार्ट ऑफ द सिलेबस. देन इवेंचुअली जब आप ये कर लोगे तो वो करंट अफेयर वाला पार्ट अपने आप एक ट्रैक पर आ जाएगा. इसीलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द सेकेंड नंबर ऑफ पीपल who have started their preparation, उनकी complete भी नहीं हुई है and they are chasing the current affair. Of course, this is my personal view, as I told you in the disclaimer itself, कि हाँ मैं जो भी बात कर रही हूँ ये मेरा अपना मानना है. You might differ on this, right? Now let's briefly talk about the strategy that one should ideally have for paper 1 and for paper 2. First, let's cover the paper 1.
See, when you talk about the paper one, for anyone who's having a non-anthropology background and coming from a non-biology background, this paper one will be a entirely new entity, right? जब आप syllabus के अंदर देखोगे, so there you have to start from what is anthropology, then you're moving towards the branches, then anthropological theories आ जाती हैं, then from 9.1 till ahead आप मोस्टली बायोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ते हो. ऑफ कोर्स आपको 1.4 और यहाँ के अंदर भी पढ़ने हैं. सो देयर आर वेरी न्यू थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. ऑल्सो ये जो सिलेबस के अंदर आपको चीज़ दी गई हैं, व्हेन यू जस्ट लुक डाउन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, you will find it out that most of the questions are directly from the syllabus. Of course paper 2 में भी ऐसा ही होता है, syllabus के बाहर कुछ नहीं पूछा गया, but especially for the paper 1 if you talk about, so you can see there are keywords which is there in the paper which is asked in the previous year questions are more or less on the similar line, and someone who has done a good job in memorizing thing, in making a good note, exhaustive note, and producing it on the paper with good diagrams and presentation, they can definitely get good marks in the paper 1, right? और पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो अभी तक जो जो चीज़ें हमने बात की है ये उसी का एक आप कह सकते हो समराइजेशन है. दैट फर्स्टली वन शुड नो अबाउट द सिलेबस, देन यू कैन स्टार्ट विद द केरला एससीईआरटी जो पेपर 2 नहीं बल्कि पेपर 1 को ही कवर कर रहा है, राइट? देन उसको करने के बाद यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये साइकिल आप रिपीट करोगे, यू विल मेक अ नोट ऑफ योर सेल्फ विच इज़ योर नोट, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर एल्स. इट शुड मेक द डिफरेंस. And when I say not copied from anywhere else, it means that you can use any of the base notes. चाहे वो आप हमारे चैनल के नोट्स को यूज़ कर सकते हो, चाहे आपने कहीं कोचिंग ले रखी है वहाँ के नोट्स को यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट कैन नॉट स्टॉप देयर बिकॉज यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू सिक्योर गुड मार्क्स. और आप दूसरों के नोट्स कितने भी पढ़ लोगे वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा, बट आपको एवरेज मार्क्स तक ला के छोड़ देगा. व्हेन यू हैव टू सिक्योर रियली गुड मार्क, आपको अपना एफर्ट्स तो देना ही देना पड़ेगा. और ये एफर्ट्स आप कैसे दोगे? अगेन ये एफर्ट्स आप दोगे हर एक टॉपिक को फर्दर एनालाइज करके, पेपर 1 और पेपर 2 को इंटरलिंक करके, देन टेस्ट सीरीज या आपने जो भी पीयर रिव्यू के दौरान जो टेस्ट लिखे हैं उसमें जो भी आपको इनसाइट्स आए हैं उससे, एंड एट द एंड अगर कुछ बच जाता है देन करंट अफेयर और ऐसी सारी चीज़ों से, राइट? केस स्टडी ऑफकोर्स पहले इंक्लूड हो जाती है. तो इस तरीके से आप एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, डोंट बी डिपेंडेंट, स्पेशली ओवर डिपेंडेंस तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन ऑन दिस चैनल, बिकॉज दैट इज गोइंग टू ruin you, राइट? आपकी जो यूनिकनेस है दैट लाइज विद इन यू, एंड nobody can make you get good marks other than you. ओके, देन हम पेपर 2 की बात करते हैं. पेपर 2 का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, स्पेशली अगर मान लीजिए आपने 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है, बिकॉज 2022 जस्ट गॉट ओवर रिसेंटली, मे बी आपने नहीं किया हो, बट 2021 का एज्यूम आपने देखा हुआ है. 2021 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, फैक्शनलिज्म को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे. बट लेट मी जस्ट आस्क यू दैट टेक अ पॉज, गो थ्रू द सिलेबस, एंड वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स शब्द कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट? देयर इज़ अबाउट कास्ट, देयर इज़ अबाउट डोमिनेंट कास्ट, बट ये पॉलिटिक्स और इसके इंटरलिंकेजेस, फैक्शनलिज्म, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज दीज आर डिराइव्ड थिंग्स. जब आप पेपर 2 की बात करते हो, इट इज़ प्योरली बहुत ऑर्गेनिकली ये सोशल साइंस की तरह निकल के आता है, जहाँ पे चीज़ें आपको समझ के पेपर पे उतारनी होती है. यू हैव टू मेक योर ओन एनालिसिस एज वेल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि पेपर 2 काफ़ी डायनामिक भी होता है, बिकॉज आपको डायनामिक पोर्शन वहाँ इंक्लूड करना होता है. वहाँ पे आप चाहो तो जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो. ट्राइब्स को लेके कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है, कुछ चीज़ें हुई हैं, वो आप वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो. तो पेपर 2 में करंट अफेयर का भी स्कोप बनता है, बट ऑफकोर्स वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, पेपर 2 के अंदर स्कोप बनता है आपको अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को शो करने का. Do not make it look like a GS answer. You have to quote the scholars, the books, and everything else, which you can eventually get when you have completed the syllabus. You have a good notes with you. तो इन सारी चीज़ों को करके आप पेपर 2 कर सकते हो. बट अगेन, ना तो पेपर 1 ना तो पेपर 2 आपको स्पून फीड किया जा सकता है.
टू एन एक्सटेंट पेपर 1 फिर भी किया जा सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी नहीं सुनी है, आपको कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट समझा दिया जा सकता है. बट पेपर 2 के केस में सेटिंग अपार्ट फ्यू टॉपिक्स, जैसे कि शुरुआती आपके 1.1 हो गए, देन 1.2, इस तरह के जो हैं, इनके अलावा स्पेशली जब आप आते हो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हो, देन कास्ट के बारे में बात करते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपना माइंड भी यूटिलाइज करना होगा. यू कैन स्टडी अबाउट द विलेज स्टडीज, बट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली विलेज स्टडी के बारे में नहीं पूछ लिया जाएगा. यू वोंट बी आस्क कि एम एन श्रीनिवासन की विलेज स्टडी के बारे में बताइए. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आई एग्री, बट डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन टू कम डायरेक्टली टू यू. आपको पूछा जाएगा, देन आपको हो सकता है विलेज स्टडी में पूछ लिया जाए कि जेंडर के बारे में क्या विचार थे इन ऑल दीज विलेज स्टडीज. देयर यू नीड टू नो कि कौन कौन सी विलेज स्टडीज की गई हैं, किसने किसने की है, उनके क्या क्या व्यू पॉइंट्स रहे हैं. देन यू कैन कोलेट एंड देन यू कैन राइट इट डाउन, राइट. तो यहाँ पे पेपर 2 के अंदर आपको अपने जो वो एनालिटिकल हैट है वो लगा के रखने हैं. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 2 के लिए, बिकॉज पेपर 2 के अंदर आप कंटेंट जान सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा आपको उसके हिसाब से लिखना है. पेपर 1 में आपको हो सकता है पूछ लिया जाए व्हाट इज जेनोमिक इम्प्रिंटिंग, आप लिख दोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन रहेगी, राइट. कास्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप कास्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो, बट यू ऑल्सो नीड टू शो, बिकॉज कास्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है विच इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, राइट. यू हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड. तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, देन द स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनको लिख के कर सकते हो, राइट. तो इसीलिए पेपर 2 के अंदर सबसे पहले आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करो, मेक अ बेस कंटेंट. Again, you can utilize the notes of our channel, which is completely good for you to start with. Then आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपको और ऐड करनी चाहिए, you can definitely add and make it unique for yourself, right? So this is how you differentiate between the paper 1 and the paper 2 strategy. In case if you have any more doubt about these paper 1 and paper 2 strategy, you can definitely comment it down, okay? I'll try to answer that as well. Now, talking about कि कैसे हम freely available resource को utilize करें, because हमारे जो YouTube पर channel है Anthropology for UPSC, that's a freely available resource. Apart from this, there are many other institutes also which are providing you the freely available resources. There are various Telegram channels which are providing you with the freely available resources. And of course, you can interact with people and learn from them also. So how do you utilize all these resources? See, again, for a proper utilization, for you to not get lost somewhere, first you need to take a stand for yourself. और वो stand कैसे आएगा? जब आपने अपना बेस वर्क तैयार कर लिया है, देन आप जाके इन जो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे कोई दूसरे आपको वैल्यू एडिशंस दे रहे हो, ये तभी आपके काम आएंगे when you have prepared a base for you. And that is where I try to help you with that by providing all these lectures. अगर आपको लगता है कि these lectures are helping you in preparing a base, then well and good. If you find them useful, go ahead and see that. If not, then find out any other way जो आपके base को create कर पाए. And when you have created that base, then start listening to everyone. ठीक है, आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग insights आएंगे. Sometimes it might happen कि आपके एग्जाम में 1 महीना बचा हुआ होगा, and if you start reading something, आपको लगेगा wow, this is something very new which I got to know. ऐसी चीज़ें होती हैं, don't worry about that, because learning never stops, right? और इसकी कोई limitation भी नहीं है. So try to improve every day. But ज़रूरी ये है कि understanding हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 पेज के notes किसी ने दे दिए या कुछ हो गया, आपने उसको देख लिया, wow, I have collected so much of notes with myself. That is not going to help you, right? Unless you don't understand it, it's of no use. In fact, it is a waste, total waste of your time, your effort, and sometimes your money as well. Are the notes provided by Anthropology for UPSC sufficient? So I hope by now you must have got the answer, or you might have got the answer, that nothing is sufficient. When you say sufficient, it itself is a big word. But what this notes and the lectures have tried to do is to make your life much easier. Instead of running behind the coaching materials, instead of running behind various books,
First of the thing that you need to do is to watch the lectures. Then you can go through the notes if you wish to, and make that notes your base notes. Although each and every topic of the syllabus is covered in the notes in a manner which is easy to understand by any of you, then eventually when you have that particular note with you, you can very easily do the value addition. You can very easily add that case study, and even for that matter, the current affairs, because here lot of your time is saved. And remember, time is money. Time is money over this preparation journey. आप जितना टाइम बचाएंगे उतना अच्छा है, आपको रिवाइज करने का उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा. So work smartly. Don't just blindly rely that I have got the anthropology for UPSC notes. Now this is enough. I'll just do the ratification and produce it in the examination. That will never gonna happen, because आप दूसरे के notes कितना भी पढ़ लेंगे आपको याद नहीं रहने वाला. Whatever like you are comfortable to write it down in the hard copy, pen pencil जो भी आपको लिखना पसंद है वैसे लिखो. If you wish to make the digital note out of it, make the digital note. Then आप add on करते जाओ चीज़ें. और जब आप वो एड ऑन करोगे आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ योर रिविजन टेस्ट, देन यू विल फाइंड कि आप जब वो डी डे है, द एग्जामिनेशन पॉइंट, जब आप जाओगे 2023 में मेंस एग्जामिनेशन में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पेपर देने के लिए, देयर यू विल हैव इमेंस कॉन्फिडेंस विथ यू. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है. ट्रस्ट मी, आई टुक many months to prepare this notes, because at that point of time I was in complete disillusion कि क्या करना है, कैसे करना है. I did not have that liberty to go for the coaching institute that can give me the guidance, and I think that was good, because sometimes no one can teach you better than you. So believe on yourself, believe on the kind of preparation that you are doing, believe on your own strategy, make your own strategy, because everyone is different. कुछ लोगों को चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोगों के अपने अलग तरीके होते हैं चीज़ों को पढ़ने समझने के. बट अबव एवरीथिंग, अबव ऑल, यू शुड कीप द सिलेबस विथ यू. आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना है. आपको भागना है तो उसके पीछे कि व्हाट यू हैव परफॉर्म्ड इन योर लास्ट टेस्ट, यू आर एबल टू डू समथिंग बेटर इन दिस टेस्ट. दैट्स इट. अगर आप इतना करने में कामयाब रहते हो, then trust me, you are going to get very, very, very good marks in your examination. Other than this, nothing else is required. So believe that कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ के नोट्स पढ़ रहे हो, यहाँ के लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे आप like in some random way you have landed on this particular channel, whichever way, you have to trust on whichever resource that you are following. आपको उस पे स्टिक रहना है एंड उसी के ऊपर बिल्ड ऑन करना है, ठीक है. एंड व्हेन यू स्टार्टेड बिल्डिंग अपॉन दैट, इट इज गोइंग टू डू मिरेकल फॉर यू. ऑलराइट, एंड आई होप काफ़ी सारे डाउट्स आई ट्राई टू like answer through this particular video. But even if there are some doubts with you, you can definitely email me, you can write it down in the comment section. I'll try to answer all of those. And as I told you in the beginning, this is not going to be a kind of a book list for you and do, and particularly this is for the don'ts. कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, avoid करनी है, right? So I wish you all the best for your examination and for your UPSC journey. Thank you so much.